and a very warm welcome to each of you on behalf of Maja House, the Indian Academy of Fine Arts, and our collaborating partner, the Prabha Khaitan Foundation. A special welcome to our chief guest, Dr. Kiran Bedi. Thank you for being here. Maja House is a cultural and literary platform which has been set up in our family home in Basant Avenue, Amritsar. We started in March 2018, and today, 4.5 years and countless standalone events, online sessions opened up. Today, in the first of our year-long donation and 75 sessions, which we are putting together to mark 75 years of our independence and freedom from foreign yoke. Today is that important day when we are beginning. From that blood-soaked August of 1947, the long walk home to the India of August 2022 is what we are going to explore through these sessions and events that we are holding. The echoes of partition, the ghosts of that searing traumatic past, the scars of which we all bear here in Amritsar and in Punjab, the importance of memory, the nostalgia, the hope, the frenzy of that time, the great upheaval that shook the subcontinent, and then the hope that a newly minted nation and its constitution offered to us. And the Indian Academy of Fine Arts, and Dr. Chamak, who's of course been a huge support, Mr. China, all of you for helping us constantly. And the Prabha Khaitan Foundation, as you know, is one of the leading names in the creative arts. And with that, I think we should begin the evening. Arvinda, can I invite you now to please come and take over? दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों, प्रोणियों, अमृतसर दी इस कला भूमि दे विच, इस कला दे मंदिर दे विच नतमस्तक होंदा तुहानू जी आया गया। मैं दरख्वास्त करांगा सारे रूहे रवा और चेयरमैन इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से सरदार चंद्रमोहन सिंह दी चीना कि वो ऑन ते रस्मी तौर पर तुम्हारे सारे का स्वागत कर और अपने दिल में बंद बनिया के विचों कुछ असीसा इस ऐतिहासिक दिन दे विच तुहानू सारे होते हैं सरदार चंद्रमोहन सिंह चीना। हाज़रीन, आज बहुत खुशी भरा दिन है कि दो अमृतसर दी बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और सानू इत्थे बैठा भी फख्र होंदा है कि साडे अमृतसर दी बेटियां अमृतसर दी धीआं ने दोनों। डॉक्टर किरण बेदी 2003 की सीरीज़ 2004-2006 दी पेंटिंग बड़ियां हुई ने वो इन्होंने आर्ट गैलरी में डोनेट की है। उन्होंने ही तुसी एग्जीबिशन देख के आए हो, बहुत अच्छा कलाकार नमूना है। और हुणे असीं ऑफिस दे विच बैठे सीगे ते काफ़ी यादां इन्होंने अपने बचपन दियां, अपने फादर दियां, अपने घर दियां, जिहड़ा कटरा शेर सिंह विच इन्हां दा घर हुंदा सी, उन्हां सारिआं नूं याद कर रहे सी। और मैनूं खुशी है कि हुण इन्होंने जिक्र कीता सी साडे नाल कि अमृतसर के उत्ते होर ज़्यादा काम करना चाहते हैं और जरूर इसका मतलब यह है कि अमृतसर के आने वाले टाइम से काफ़ी टाइम इतने समा बतीत करेंगे और हम अपने जीवन का जोड़ा हिस्सा है अमृतसर को डिवोट करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी गल है कि जिते आदमी पैदा होया हो, जिते रूट्स हो बंदे दियां, जोड़ा बंदा अपने रूट्स को नहीं भुलता, बंदा कभी जिंदगी के कितने हमेशा कामयाब रहता है। तो सानू अज बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि अमृतसर के दोनों बेटियां का इतने आना, किरण बेदी का इतने चीफ गेस्ट आना और डॉक्टर दीप्ति नवल का अज बुक रिलीज इतने होनी, असी बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वाले। और अमृतसर की जी अज एलीट क्लास है, जी लिटरेरी जोड़े लोग ने वो सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। मैनू सारे नज़र आ रहे हैं, सारे एक बढ़ के ने। मैनू खुशी है कि तुम सारे इन्होंने दोनों शख्सियतों को प्यार करने वाले इतने इकट्ठे हुए हो। तुहानू सारिआं नूं जी आया नूं। और मैं अखीर दे विच जिहड़ा पूरे देश की अज 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की असीं मनाउण जा रहे हैं। इस साल दे विच 15 अगस्त अज भावें एक हफ्ता दूर है,
लेकिन उस तो बाद दोबारा इस पूरी ऑडियंस इस गैलरी मिलिए ना मिलिए मैं तुहानूं 75वीं वर्षगांठ की पौनी सदी हो गई है देश आज़ाद होया वो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई दिंदा थैंक यू वेरी मच और अगे स्टेज पर चलो थैंक यू बहुत शुक्रिया उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਖਾਤਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਰਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਉਹ ਸੋਲ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੋਮਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਦਕਤਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੇ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਗਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਲੋਡੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ 21 ਆਰਟ ਵਰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ 10 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਪੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦ ਕੰਟਰੀ ਕਾਲਡ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ ਪਲੀਜ਼
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ Oh my God, let's see. Of course. And this is Deepti's? This is Deepti's? That's it. That's it. Really can be part of it. Okay. Thank you. We can come ahead. Okay. Ma'am? Okay. Okay. So with your thunderous applause, the country called Cheif. It's an honor. And now may I request Dr. Kiran Bedi to share her views and feelings. A few words. You know what's going to start? मैं दिप्ति के कारण आई आज तुसी नहीं बुलाया दिप्ति ने बुलाया मैं दिप्ति के कारण आई और मेरा दूसरा इवेंट है दिप्ति के नाल दिप्ति ने बुक रिलीज जो दिल्ली की थी तो मैंने ऐसा मैसेज आया सी और मैं बहुत खुशी के नाल गई सी क्योंकि मेरी सहेली ने अपनी किताब की बुक रिलीज है और वो सहेली जो मैं उदों जानती है जब मैं भी 9 साल 10 साल इको टोंगे चढ़ते सी अमृतसर मैं केसरी बाग रहती सी जलियांवाले बाग के कोल और हॉल बाजार के कोल रहती सी और असी इको मेरी भैन मेरी छोटी भैन जो एना नाल नज़दीक सी और असी इको टोंगे सी ये मैनू जदों भी अमृतसर के बारे जिक्र होता है तो मैनू हमेशा दिप्ति के बारे पूछा जाता है क्योंकि दिप्ति has stood out amongst the Amritsar Sacred Heartians for all these years. So असी दोनों मिले या ना मिले लेकिन दिप्ति और मैं पता नहीं इनू मेरे बारे पूछा जाता कि नहीं सी मैनू ये बारे जरूर पूछा जाता सी और मैं दिप्ति ने कहा सी कि मैनू वो पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती है उसी तरह सिंपली एक्ट कर दी है गल कर दी है जिस तरह है इन्हें अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी ऑनेस्टी रिटेन की थी अपनी सिंपल एक तरह की पवित्र एक इनोसेंस आई थिंक द वर्ड इज इनोसेंस टू रिटेन किया इस करके मैं हमेशा एक सेंस ऑफ पर्सनल प्राइड रही इस करके जो दी बुक दी रिलीज हुई तो मैंने बड़ी खुशी हुई और भी वधिया गल कि द फर्स्ट 19 years ऑफ आवर लाइफ इज इन दिस बुक कल मैं दिप्ति और मेरी छोटी बेटी मेरी बेटी नितिना ने मिलके एक ऑनलाइन बातचीत प्रोग्राम किया दिप्ति के नाल विच इज़ ऑनलाइन ऑन डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग और दिप्ति और मेरी बेटी साइना के नाल बड़ी वधिया गुफ्तगू हुई सी और अगर तुसी देखना चाहो तो चले जाओ क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब डेमोन्स्ट्रेटिव चैनल पर मेरी बातचीत हुई है और उस बातचीत बुक के बारे ही सीगा क्योंकि मेरी बेटी ने पूरी फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक मेरी बुक दिप्ति की पढ़ी और उसने कहा कि मामा मैंने इसका कोई पुराना इंटरव्यू नहीं देखा जान के क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ओरिजिनली बोलूँ ये नहीं इससे पूछूं जो इसको पहले इंटरव्यू से पूछा गया है मैं सिर्फ वही पूछूं जो ये है अपनी बुक में तो कल मैं ऑलरेडी दिप्ति के नाल पूरा 1 घंटा बातचीत के प्रोग्राम शामिल रही और उस बातचीत में बुक की सारा जिक्र है और बड़ा क्लियर और मैं भी इन्हें क्विज करती रही कि ये सारी चीज़ें तू लिखियाँ कितों सेक्रेड हार्ट स्कूल ने की रोल प्ले किया है मुझे नहीं पता क्योंकि ए ज़्यादा जानती और ना ही मैंने पूछा लेकिन एदी फादर और एदी मदर का इंपैक्ट ऐसे किस तरह आया और शहर के विच जो होता रहा वो मैनू कल बातचीत साफ बहुत सोना इन्हें समझाया और दिखाया सब तो वधिया गल नजर क्या आई कि एदे फादर was a very well known very learned उन्होंने स्टूडेंट अशोक सेठी भी बैठे एंड अशोक was also telling me कि बहुत ही अच्छे इंग्लिश टीचिंग करते थे वेरी लर्नड एंड वेरी शायद ऐसे कारण अपना करियर बहुत बढ़ाने वास्ते
बाहर चले गए, विदेश चले गए अपने करियर ग्रोथ वास्ते, लेकिन जरा लिटरेचर लिता, राइटिंग लिती, मेरी ख्याल है कि फादर का इम्पैक्ट होया बहुत ज़बरदस्त। एंड if I'm not wrong, I do not know, but that's what I gathered along from our discussions in your debate yesterday and today. और मदर का इम्पैक्ट क्यों होया? एक बार मैं कल क्विज किया कि और एने सब अपनी दिल की गल करती उन्हें, और जो बुक विच भी लिखी हुई है और बुक विच भी एक्सप्रेस्ड है डिफरेंट लाइन्स दे विच कि ए फिल्म्स दे शी वाज एन इंट्रोवर्ट, शी सेड ए बड़ी ए लगदी नहीं लेकिन बड़ी इंट्रोवर्ट रही, अपनी दिल की गल ने अपने कोल ही रखी, किसी को नहीं सच्ची मुच्ची दसिया, और कहती ना मैनू कोई दसन वाला सीगा और शायद ना कोई समझन वाला सीगा उन दिनों च बहुत कि मेरी अंदर एक्टिंग छिपी हुई सी, आर्ट ऑफ फिल्म छिपी हुई सी, और मैं चाहती सी कहती है कि मैं बड़ा बड़े पर्दे से मैं हमेशा अपने आप को देखना चाहती सी एज अ स्मॉल गर्ल। सो एंड फिर मैंने पूछा कि तू कदों तेरे दिमाग च आना शुरू होया कि मैं अपनी बिग स्क्रीन से अपने आप को देखना चाहती। गल्ला में निकलिया कि दी मदर दी अंदरूनी नीड सी, एदी मदर की नीड सी, और एदी मम्मी दीप्ति दी मम्मी देविका रानी और एदी पिक्चर्स दिखांदियां भी होती सी, गल्लां भी करते होते सी, और फिल्म की गल्लां बढ़िया करते सी, लेकिन ए कह के मैं फिल्म जाना है तो कहेगी क्यों जाना, किधर जाना है की फिल्म, बच्चा लड़कियां का थोड़ी काम है। ए उन दिन उस माहौल विच फिल्म्स डांस म्यूजिक उस films was a no for girls, but dance and music was an extracurricular activity, not a profession. वो सीखा कि लड़कियां को कला आनी चाहिए, जी साड़ी लड़की को गाना भी आता है, जी साड़ी लड़की को थोड़ा नृत्य भी आता है, लेकिन ना ला दहेज भी दिता जाता था लड़की दूसरे के घर चली जाए। वो बहुत सीखा चंद दिनों में दीप्ति और मैं बर्थडे हो रही सी ऐसे पल रही सी, बर्थडे हो रही सी अमृतसर, और मैं दीप्ति ने भी पूछा कि याद है तेन कुछ तेन ले जाते होंगे सी उत्थे डाउरी डिस्प्ले दिखा, हाँ कहती मैं याद आ रहा है बहुत सारी डाउरी डिस्प्ले भी उदों होंदियां सी, और सो असी दोनों जिन्होंने ने नोट्स भी शेयर किए। मैं समझदी हाँ कि तुसी जब दीप्ति की बुक पढ़ोगे तुसी दीप्ति की आत्मा पढ़ोगे, पहले 19 ईयर्स दे विच एदी आत्मा च की हो रहा सीगा, एदे दिमाग च की हो रहा सीगा, एदी इमेजिनेशन की हो रहा सीगा, और एदी आत्मा की बोल रही सी। इट्स अ सोल राइटिंग। बड़ी रेयरली बुक होती है कि कोई इतने साल के बाद कोई अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे लिखे और वो इतने सालों बाद याद करे। एडी ने पूछा मैं कल, और इन्हें दसिया कि मैं बुक बड़ी देर पहले लिखना शुरू करता सी, कुछ चीज़ां जो मैंने याद आती सी मैं लिखती रहती सी, लेकिन वो पईयां रहिंदियां सी, मगर एक दिन मैं इन्होंने परो दिता आपस में। वो कदों स्टेज आती है, एक इंटलैक्ट स्टेज होती है राइटिंग की जी कहते कोई काबिल सीगी सेक्रेड हार्ट स्कूल। इमेजिनेशन होती है जो कि एनी इमेजिनेशन एज अ पोइट निकल रही थी फॉर द फादर, बिकॉज राइटिंग्स एटसेट्रा कमिंग फ्रॉम द फादर। So poetry, I believe he was a very good poet as well, as a show was telling me. So poetry and writing came from the father, and the hidden dream or need or sense of fulfillment of drama or acting or cinema came from the mother. And ये दोनों चीज़ां, intellect from the father, emotional connect and imagination from the mother, and finally लिखी कदों जो तो प्रकृति मिली। क्या जानता है कि how do you get this person right and what does a person क्यों लिखता है? एक इंटेलेक्ट को एक्सप्रेस करता है, जो ईगो इंटेलेक्ट आ जाती है तो वो लिखता है, वो बोलता है, ऐ होया ऐसी इंटेलेक्ट जो नहीं अहम आ गई कि मैं लिखा और मेरी ज़रूरत है। दिल के विच दस ऐसी चीज़ां इमोशनल ते बदलियां सी थ्रू इमेजिनेशन, क्योंकि बुक इज ऑल इमेजिनेशन, ऑल परसेप्शंस, जो देखती रही जो होता रहा उन्होंने सोनी तरह अपने अंग्रेजी लिखा जिहदा क्रेडिट सेक्रेड हार्ट स्कूल में जाता है। लेकिन फाइनली लिखी कदों गई जो तो प्रकृति कट्ठी हुई। प्रकृति का मतलब है कि जो आत्मिक कॉस्मस एनर्जी कट्ठी हुई जिन्हें फिर फाइनली हमें क्या उनको एक लिख रहे। This is a feeling. I think you are seeing a book written, an expression of a soul which is expressing, which is intellect and is imagining.
So this is how I have read, seen and so far understood that as young मेरी सहेली ने book the background की. So साथियों मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शहर की और मेरे स्कूल की मेरी हम रहा हम सब मेरी फ्रेंड as शौहरत मिली as दुनिया में क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ हैं चाहे वो नाम यूनाइटेड नेशन में पढ़ा जाए और चाहे वो किसी और शहर में पढ़ा जाए एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरी नवी किताब थोड़ा सा दिप्ति तो हट के मन दस रही है मैं एक अपनी बुक लिखी है शायद मेरे अमृतसर के भैन भरा उन्होंने नहीं पता मैं भी एक बुक लिखी है गलती के नाल और उस बुक का नाम है सेल्फलेस गवर्नेंस फीयरलेस गवर्नेंस जरा 5 साल का काम एज लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी एक अमृतसर की लड़की ने की किया एज लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बुक आ गए और उनको पता चलेगा कि अमृतसर की मिट्टी के विच पानी में कुछ चीज़ अजीब है बड़ी बहादुरी है बड़ी देर दिली है बड़ी सेल्फलेस सर्विस है बहुत त्याग है बड़ी कुर्बानी है बड़ा पता नहीं क्या है दीज आर द कॉमन थीम्स विच आर एक्सप्रेस्ड इवन इन दैट बुक called fearless governance ਜਿਹੜੀ ਕਿ obesity wise रिलीज हो रही है और ਹੁਣ मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ इस महीने के एंड ਵਿੱਚ अमृतसर की रिलीज तो पहले न्यूयॉर्क से रिलीज होती है ये साड़ी कल्चर है जब तक कोई चीज़ बाहर ना रिलीज हो जाए वापस भी कर आनी तो शायद अमृतसर को तो Thank you so very much, Doctor. It's indeed an honor to have you here. Now, before I request and invite Gayatri, I would like to share something which is very fascinating. Today we'll be having a discussion on the book, The Country Called Childhood, and Kishore and Deepti would be discussing about the book. And we'll be having a live portrait making, sketch making of Deepti by our national level artist, Kulwan Gill. So, please give him a round. So, Kulwan ji ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ. So, I request Gayatri, please come and introduce the speakers. Thank you. Good evening, everyone. A wonderful guest for today. Deepti Naval is an Indian actor, director, writer, poet and painter. A multifaceted personality, she has carved out a distinct niche for herself in the Indian film industry and has won critical acclaim for her sensitive and close-to-life portrayals that emphasize the changing role of women in India. Deepti has published 3 books, Stories from Then and Now, in 2011. Her poems are reflective, sometimes autobiographical, and constitute a direct and honest female voice. A graduate of Hunter College, City University of New York, she acquired her bachelor's degree in fine arts, studying painting as a major subject, along with psychology, astronomy, and American theatre. As a painter, her knife work with oil on canvas is distinctly expressionistic, and you can have a look at the same, some of her beautiful pieces right here at the gallery today, which incidentally is where she did extensive work during the time that she spent in Amritsar during her youth. This and other such nuggets about her life can be found within the pages of her new book, A Country Called Childhood, which is a memoir of her life and talks about her growing up years in the city of Amritsar during the tumultuous 1950s and 60s, and how her experiences here shaped her career as one of the country's most admired actors. In conversation with her today, we have Kishore Tukral, a writer and photographer based out of Delhi and Goa. An avid trekker and traveller, Kishore is the author of several books,
The Chronicler's Daughter in 2002, a travelogue Spiti Through Legend and Lore in 2006, and 2 coffee table books, Sharanam Gacchami, An Album of Awakening and Ephemera. He has recently finished his second novel, which is in its final stages of editing. In Hindi, Kishore has written short stories and plays that have been performed by mentally challenged children and young adults. He has also translated and written songs, including one for the award-winning film I Am Kalam. He has to his credit a number of exhibitions and illustrated lectures on Spiti, Dankar, and Himalayan and Tibetan Buddhist art. Kishore and Deepti have known each other for over 15 years and met, incidentally, at Kishore's own book launch several years ago. We welcome you both. Please, Kishore, if you could also come. Yeah. We welcome you both and look forward to an intimate and fun conversation today about Deepti's book called A Country of God's. Thank you. Throat, so you'll have to excuse my voice being, बीच में टूटती है आवाज़, but I'll try to do my best. Yeah. So, why we began with these film clips? Because Deepti was sure ultimately the discussion would veer around the films. So we thought we'd start with the films and then come on to the book. But anyway, the films are a part of the book too. And Deepti's journey in cinema actually began in the cinema halls of Amritsar. Ambershire. Chitra, you also know these two Kasur. Chitra talkies, other cinema, region talkies we were never allowed to go. Nor were we allowed to go to Amrit talkies because वो ठीक नहीं कि वहाँ तो ऐसी B grade and C grade फिल्में आती हैं, तो वहाँ तो कभी जाना नहीं हुआ. But yes, Chitra talkies, Adarsh, the one under the Bandari Bridge left me. Ashoka talkies. New Rialto. It seemed like the oldest cinema in town, but it was called New Rialto. Yeah, I do talk about it. Just sharing, Chitra Taki was the first in the region, and it was known as the Manasita Madua. Yes, I have written about the man who made Chitra talkies. He built the talkies, and it was his contribution. He was such a cinema lover. हाँ, वो लिखा है मैंने उनके बारे में किताब में. And that's where your passion for cinema began. हाँ, Meena Kumari days, Sadhana days, yeah. Rajesh Khanna days. Yeah, when I was younger, the actors that impacted me first was Meena Kumari. Was a big, huge impact on my mind because I used to think that she just doesn't acting तो ये करती नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फील करती है, उनका कोई इमोशन वो झूठा नहीं है, वो एक्ट पुट ऑन एन एक्ट नहीं है, वो ऐसे ही फील करती होगी और ऐसे ही दिखता है हमें पर्दे पर. So I was convinced that she was one of the better actors of Indian cinema. I was very enamored by her. I loved her personality और जो भी उनमें डेप्थ जो थी, I think that's what appealed to me as a child. कि मीना कुमारी में जो डेप्थ है, वो वैसा कुछ हो तब बात बनती है. When I will join films and when I become a film star, I will not do any frivolous stuff. I will not just wear a lehenga and prancing around in front of the camera. I will do roles जहाँ जिसमें डेप्थ है और जो कोई परफॉर्मेंस जो है उसको आप घर ले जाते हैं. It stays with you. You carry it with you. You don't just go to the cinema, get entertained, मज़ा किया, had a good time और भूल भाल गए और आ गए वापस. I always liked films जिसमें कुछ रह जाता था और बहुत कुछ ऐसे मैंने बटोरा है as a child, as a young girl. And you had an uncle who could go and watch a film first and then
recommend whether it was... No, that was my mother's mandatory days. Oh, yeah, right. That is so My mother was very fond of cinema also. And उनके वो बर्मा में पली बड़ी थी, तो उनके चाचा जी थे जो पहले वो फिल्म देख के आते थे और फिर वो बच्चों को कहते थे कि देखना है कि नहीं देखना है. So that was a monitoring of a different kind, because उसमें English films बहुत होती थी. They were growing up in British India. तो हमारे यहाँ पे तो रेगुलर हमारी फिल्म्स होती थी जो पॉपुलर सिनेमा में, और उसमें से भी मुझे जो कोई मैसेज हो, जैसे आई वॉज वेरी इनार्मेड बाय जिस देश में गंगा बहती है, मुझे वो बहुत इम्पैक्ट करी. मुझे गाइड संगम, एज आई ग्रू टू बी अ टीनेजर, तो मेरा नाम जोकर, गाइड, संगम, दीज फिल्म्स बहुत इम्पैक्ट की. तो आई थॉट यार दिस इज गुड सिनेमा, गाइड दिस इज गुड सिनेमा, संगम जैसी फिल्म. एंड ऑफ कोर्स आई वॉज अ बिग राज कपूर फैन एट दैट टाइम. ही वॉज द शोमैन of the industry, and I was a big fan because his films always had a message, and वो मुझे अच्छा लगता था कि कुछ सोचते हुए आप घर जा रहे हो फिल्म देखने के बाद, you're thinking about it, it's giving you something to think about. So that kind. And of course there was also the sadhana phase when she got her cut. She got the sadhana cut for herself. That was what age? Yeah, I think 11 and 12. Sadhana phase came after the Meena Kumari phase. पहले तो मीना कुमारी का क्रेज रहा, फिर जब साधना को देखना शुरू किया, मेरे महबूब, असली नकली, वो कौन थी तब तो हम लोग फिदा थे साधना पे. We all wanted to be like साधना. हम दोनों, yes, हम दोनों. And वो कौन थी was big impact. She was a mystery girl, and we liked her. We liked the mystery about Sadhana. और अगर कोई लड़की स्टोरी सुनाने की कोशिश करती थी, हम उसको भगा देते थे. No, don't tell us, हमको देखना है ना अभी फिल्म. You can't tell us the ending क्या होगा. फिर वो दौर आया, शर्मिला टैगोर, अनुपमा, and yes. साधना के बाद एक दौर आया जब शर्मिला टैगोर की एक फिल्म आई अनुपमा. तो वो पूरी फिल्म में शर्मिला जी डजंट स्पीक अ वर्ड. तो वो पूरा सीजन मैं भी वो साइलेंट मोड में चली गई. मामा आवाज़ें लगाती थी डेस्परेटली, कहाँ है टिपी, ये वो. आई वुड नॉट आंसर. आई वुड कम वेरी कॉयली and stand in the door waiting for my mother to notice that I have arrived. तो वो बहुत इरिटेट किया वो फेस मेरी मदर को. आई थिंक उसके बाद अगले सीजन में कोई आशा पारेख की फिल्म आई where she was a tomboy and prancing around, तो हम लोग भी ठीक ठाक हो गए उसके बाद. फिर राजेश खन्ना. Then of course Rajesh Khanna, of course. That by then we were teenagers. By then we were राजेश खन्ना की आराधना जो आ गई थी, आराधना के आते ही then all the girls were completely smitten over राजेश खन्ना. और फिर ये भी बातें होती थी कि वो तो अमृतसर का ही है, तो he was like we kind of ownership होती ना, वो तो हमारा ही है, वो स्टार जो है वो हमारा है, वो हमारे. he was from लोगड़ में पैदा हुए थे राजेश खन्ना जी, है ना. तो वो फेज काफ़ी क्रेजी था. हम लोग मुझे याद है जब सफ़र जैसी फिल्म रिलीज़ हुई, तो मैं और मेरी दोस्त है नंदिनी, हम लोग ने वो गुरु कुर्ताज जाके बनवाए और वो पहन के फिर हम सफ़र का कोई 10th या 12th शो देखने जा रहे हैं. गुरु कुर्ताज वो कपड़ा लिया, वो कुर्ताज बनवाए, नीचे पैंट्स और ऊपर कुर्ता. तो वी वर दिस क्रेजी अबाउट सिनेमा. बट मैं इतना खाली कहना चाहूँगी, मेरा जो फिल्म का क्रेज़ था, इट वॉजंट फॉर ग्लैमर और स्टारडम. था, होगा ज़रूर कि यू विल बिकम पॉपुलर इफ़ यू आर एन एक्टर,
तो एक्ट्रेस बनोगी तो आप कितने पॉपुलर और सब लोग आपको देखेंगे और ये लेकिन इट वॉज बियॉन्ड दैट फॉर मी द काइंड ऑफ चाइल्ड आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझे थोड़ा सा जो डेप्थ वाली, मुझे वैसे गाने अच्छे लगते थे. सजनवा बेड़ी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग न बांटे कोई. तो मुझे इस तरह की फिल्में, तीसरी कसम, तीसरी कसम यू नो इट स्टेड विद मी फॉर वीक्स. हाँ, तो इस तरह की जो फिल्में थी, अपना अपना एक होता है, कुछ किसी को बस वो एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है. मुझे ना लगता था कोई डेप्थ वाली चीज़, और मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगते थे जिसमें ज़िंदगी का सफ़र बताया जाता था. आराधना में भी एक गाना था, है ना? आनंद ऑल्सो, आराधना में भी एक गाना था, एस जी बर्मन की आवाज़ में. You know, at this point, this is my phase of cinema. I just want to take an audience both, and this is for those who not read the book. तो जो किन्हें लोग well जानते नहीं या सोचते नहीं कि दीप्ति की पहली फिल्म केड़ी थी, चश्मे बतूर, एक बार फिर. नहीं, वो हाथ खड़े करें उनको बताने. हाँ, एक बार उन्हें थे. I'm going to reveal a little secret. It was a film called जलियांवाला बाग. Yes, it was a film called जलियांवाला बाग, और वो आज फिल्म, उसका DVD जो भी है वो पार्टीशन म्यूजियम में पड़ा हुआ है. आई प्ले विनोद खन्ना's वाइफ, और आई एम प्लेइंग अ वुमन हु इज़ लिविंग इन अमृतसर, और गांधी जी आने वाले हैं. इस तरह का एक टेंशन वाला माहौल है. जलियांवाला बाग हो चुका है और लोग मारे गए हैं, और इस तरह का यू नो काइंड ऑफ उसका जो रिएक्शन होता है, उसमें परीक्षित साहनी जी थे who played उद्धम सिंह, and Vinod Khanna played a man who was killed. He was killed in the Jallianwala Bagh. तो उससे पहले का कुछ है, and I thought it was just so, कैसा इत्तेफाक है कि अमृतसर से मैं हूँ, और मेरी पहली फिल्म जो किसी को पता नहीं है, वो जो मैंने शूट की पहली, शायद रिलीज बाद में हुई, तो पहली फिल्म जो मैंने शूट की was called जलियांवाला बाग. The questions for later, please. हाँ, चलो. हाँ, we'll take the question. This is one question. हाँ. We'll take the question. You know, if you go through these book, there's a great, what do I say, visual recall, dramatic recall in her book. There's a lot of drama. I think there's a lot of drama in many lives. But this time I recall her visual memory. And the way she's presented that drama is exceptional. There was in the very beginning of the book, just her birth, the way she's described, when she is born, where she is born. I think I'd like to read that out. Yeah. हाँ. Just a little bit. It is called The Night I Was Born. वो मैं पढ़ रही थी, उसमें थोड़ा ड्रामा था. So this I described the night I was born. It was during the winter rains that I arrived. I was born on 3rd February 1952 at the VJ Queen Victoria Jubilee Hospital, located at one end of Company Park in Amritsar. It was a very disturbed, stormy night because my mother. The night you were born, it rained incessantly. I was lying in a little corner room of the hospital with you, a tiny bundle next to me on the cot. The room was filled with water. It leaked everywhere. A cold wind blew in from the slit in the window. There was a furnace in the room, but no one was around to light the firewood. The long, sprawling corridors of the old Victorian red brick structure lay empty in the thrashing downpour. Dr. Santaram Dhal, the doctor who delivered me, had wound up and left for the day. My Sardi, who managed the house and would later be my nanny,
had dropped off the tiffin and returned home. So had my father after his evening visit. The ward was dim and deserted. In the wee hours of the morning, while it was still dark, a sadhu Baba came knocking on my door, said Mama. But I was too weak to get up from the bed. If I did, I'd have to wade through the ice-cold, waterlogged room to get to the door. The sadhu kept knocking for a long time, begging, but I could not help him. Finally he left, cursing. What was the curse, Mama? I would ask whenever she'd tell me this story. I don't remember, beta, she would say. He cursed me, not you, my doll. The night I was born continues to fascinate me with all its dramatic elements. The freezing cold, the dimly lit corridors, the deserted ward, the deluge, the ominous sadhu, and his curse. ऐसा कर्स सब लोग मिले, the kind of curse. You become an actor, you become a poet, you become a painter, you sing, you dance, but you never got to dance in a... That was untrue. You danced in that homage. That is not called a dance. There is just prancing around. That's called dancing around trees or something. She's a trained Kathak dancer. She's even done solo performances in August. In August, youth festival hota tha, to usme hum log perform karte. And we had Guruji. His name was Sudarshan Kathak. That was his Takallus also. And he was a wonderful teacher. We learned from him. And I used to perform in youth festivals. Gandhi Ground, yeah. And youth festivals. And the day you were doing your solo performance, light chali gayi. Yeah, my mother, once we were performing, all the girls in Thakur Singh Art Gallery. कहाँ perform कर रहे होंगे मुझे याद नहीं आती. Main gallery में perform कर रहे थे. And there was some sort of audience, light चली गई. And my mother just grabbed us and she pulled us out क्योंकि थोड़ा chaos तो हो गया था. And then she took my class back at home. कि ये क्या है, ये कोई arrangement है, तुम लोग ऐसे ही डांस करके वहाँ पहुँच जाते हो, गुरुजी को पता नहीं है क्या, there has to be security, there has to be this, बहुत डांट. And she almost said कि no more dancing, no more. Deepti was very fond of the dust storm, Navy Eye. She has a section devoted to Navy. Yes. Right? Yes, I want to read. I want to read. It's on page 44. And there's not just a section, there's a whole chapter called Neri Eye, Neri Eye. Yeah, it's a chapter called Neri Eye, Neri Eye. A storm is brewing. A tin sheet rumbles in the wind. Dark clouds roll over. Everyone runs to their terraces, rolls up mattresses and pulls them under cover. There's the scent of rain on earth. These are the images, sounds, smells I so remember, like it was yesterday. Neri Eye was such a thrilling soundtrack during those days when we lived in a country called childhood. What fascinated me most about the landscape of Punjab were the dust storms. I found them exciting, filled with mystery, creating a sensory experience that was hard to match. I loved the Neri and I'd actually wait for it, almost certain that it would be followed by a torrent downpour of rain. They provided the element of drama to our everyday lives. Except for the grit that got into the eyes, experiencing a dust storm was thrilling, not least for the way in which it transformed the landscape. Suddenly in the middle of the day, the sky would turn pink, then a deep magenta, and finally become pitch black, as if the sun had been blown out. My eyes would brighten each time there was another ripple in the air, and the wind started to howl. Black clouds rolled over the city,
turning day into night, and yellow bulbs blinked to life, lighting up the streets. One particular dust storm when I was around 10 is etched in my memory. I'm on the terrace, enthralled by the spectacle that is beginning to unfold. I see Jeet pulling off the clothes, flapping on the clothesline, her expression dark and inward. I hear a sharp crack of a whip, then a low hostile rumble, constant and unnerving. A stray kite caught in the electric wire starts to flutter. The sky reddens, the wind picks up, turns into a squall. Rickshaw pullers scramble about in the dust-stormed street. Scraps of paper whirl and tumble madly in the thickened air. I hear Mama's voice loud and clear. Baby, come down at once. Why? Why did I have to go down when life was happening up here? I stay up on the Barsati, watching everything, and I wait. Brief. Yeah, we got the flavor of the. You must have guessed that I'm trying to draw her into a conversation in Punjabi and she keeps going back to English. बड़ी देर को वेट कर रहे हैं मैं बड़ी कोशिश की थी प्लीज how did you arrive at these English spellings of Bedi? Veda, Hara. How? There is a silent dropping forward. Navy. Veda. So I can't say V-E-R-A. I have to say V-H-E-R-A. Veda. And Navy, N-H-E-R-I. That's the way I khada. T-H-H-A-D-D, something like that. T-H-H-A-D. Then there is Malika the Buddh. B-U-T-T. When I read it first, I thought it was Malika the Butt. It couldn't be that. Then I realized she was talking about a statue. Yeah, Malika the Buddh. Malika the. Yeah, I wanted to write it as Malika the Buddh, but I think my editors decided to make it a little more recognizable. Malika the Buddh. So, thoda sa change kiya. We have editors sitting here and publishers. Diacritical marks required? There was only meant for academics. There was a character who used to live under the Khada, around the Nali that used to flow under our house on the street level. Some लोग उसको Pa बुलाते थे Pa. So he was Pa. He probably Paya, ya Paji, ya brother, like what you say for brother. But he was just called Pa. Nobody knew his name. And then there was another mad woman in our vicinity, in the gully across Katra Sher Singh wali jo street hai. If you go across All Bazaar from there, cross over All Bazaar, and there is another gully again going towards Chitra Talkies. There was a mad woman who used to live there. I don't know for what reason, but we kids used to call her My Code Killi. I don't know what was the logic. I think she was very skinny, she was built like a stick. तो कुछ बच्चे उसको सोटी भी बुला लेते सोटी आ गई सोटी. And we used to call her My Code Killi. Her name was Maitani. And I'm sure she lived her life there. I'm very fascinated. I would love to, of course, I've written about these characters जैसे कि वो मेरे बचपन से जितना वो सालों impact कर दे सीगे. But as a writer, I would love to know her life. I would love to know what happened. Hoya ki ude naal, Maitani. Where did she come from? Was she a refugee from Pakistan? There were all these mochis who were refugees in the back of our house. Mochistan. The kids used to call that whole gully and that mohalla, used to call it Mochistan. Because जब पाकिस्तान की वॉर हुई तो इनका अपना एक बहुत ही अग्रेसिव रोल था. बच्चे चिंगड़ बोर्ड जो थे सारे मोची बच्चे थे सारे कॉबलर्स.
तो हमको लगता था कि we are caught between Pakistan and Balochistan. She switched to Hindi and English again. After promising that she I'll get back to English. You know, there's a sense of history that pervades the book. It's been used as a background. हाँ, there's parents की तरफ से there is partition, there's the coming back from Lahore. My mother grew up in Burma, so there's this whole exodus from Burma which happened during World War II. और कैसे इंडियन फैमिलीज उठो दौड़ के आए असम हिल्स तो पैदल आए पैदल इस तरह सामान अपना लेके my नानी especially how the family came over 500,000 Indians दौड़ के आए बर्मा तो during Second World War और उन्होंने आके फिर इंडिया and ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ फैमिली बाबा दी फैमिली ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ लाहौर आके सेटल होए तो पता चला हम partition हो गया. So they were twice refugees. So knowing the condition of this family with 4 girls and 4 boys, 4 girls to marry off and all that, my father, उन्होंने दहेज विच ₹1 लिता क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील कर रही कि ₹1 टोकन दहेज लिता उन्होंने कि तुसी एक कॉइन दे दियो तो हो गया दहेज. So that's the family. I feel there are people like that in my family. Makes me feel very proud. मामा ने बड़े ड्रामे और डांस वगैरह किए ਜਦੋਂ refugees ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ she would perform with other girls. ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ स्वतंत्रता and all that पता नहीं गाने वाने गाते होते सी और वो करते सीगे चंदा इकट्ठा करने वास्ते because people needed help there also and finally when they came वो ਜਦੋਂ आ गए तो फिर इतने अमृतसर च फिर उन्होंने शुरू किया कि भी मामा ने बाकी कुड़ियां नाल मिल के refugees वास्ते पैसे चाहिए so they started my grandmother ग्रैंडफादर तो बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे तो उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी थी तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं प्रैक्टिस करूँगा इसमें झूठ के बिना काम नहीं चलता मैं नहीं करूँगा तो वो उन्होंने छोड़ दिया और स्क्रिप्चर्स पे ही पूरा ध्यान उनका लगा दिया लास्ट बिट ऑफ हिज लाइफ. तो माय ग्रैंडमदर हमारे घर की ये स्टोरी बहुत पुरानी थी कि हमारे घर में 17 लड़कियों को अडॉप्ट किया गया उनको पाला पोसा बड़ा किया गया उनकी शादियां करवाई गई. कहने को आता था कि 17 गर्ल्स का मेरी दादी ने कन्यादान करवाया नॉट बिफोर मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. So these are Excuse me, your father was a spiritual seeker. जी, my father at the last 20 years of his life, my father, पिताजी, उन्होंने सिर्फ कर्मा और रीइंकार्नेशन पे ही काम किया. लास्ट 15-20 साल उनकी जो लाइफ थी, he lived till about 91. तो पिछले लास्ट के 20 साल उन्होंने आफ्टर 70 सिर्फ उन्होंने कर्मा, the theory of karma, how it is important, how you are going to be born again. You will have to deal with things that you've not been able to deal with in this life. How you are going to have to come back and you know. तो बहुत लंबा उनका एक लेक्चर भी है. डॉक्टर नवल, दीप्ति नवल्स फादर, लेक्चर ऑन कर्मा. एक ही उनका लेक्चर है यूट्यूब पे. मैंने बहुत मुश्किल से कहीं से आफ्टर ही पास हुए आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि उनके ऊपर कौन सा क्लिप मिले और वो मुझे मिला क्लिप तो वो मैंने संभाल के रखा हुआ है. इफ यू कैन गो थ्रू दैट इट्स रियली एनलाइटनिंग क्लिप. And can we he was in college. She also describes him as an atheist and a communist.
मानो पता है the way he was married that night वो अपनी नवी नवेली दुल्हन की दिता उन्होंने he gave her Karl Marx की किताब क्या read it we'll discuss it tomorrow read this, we'll discuss it in a few days. My mother tells that बड़े मजे नाल दसते हुए सी मैंने किताब पढ़ाती कहने न पढ़ so those were the people. He was very adventurous. For a while he got very enamored by Planchet. उनको लगा कि we can talk to souls, spirits. तो मुझे थोड़ा सा मेमोरी है उनकी ये प्लांचेट और ये ज्ञानी जी हुआ करते थे एक ज्ञानी जी हमारे बहुत ही वाइज मैन वंडरफुल सोल वो हमारी फैमिली की बहुत नज़दीक थी ज्ञानी जी अगर कोई उनको जानता हो उनके बच्चों को या किसी को तो ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम तो शाम को रात को भंडारी ब्रिज क्रॉस करके नीचे पान की दुकान होती थी तो वहाँ तक जाते थे मामा पिताजी और ज्ञानी जी मैं और दीदी भी पीछे पीछे साथ में तो वो आफ्टर डिनर वॉक्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं मामा क्या नोटिस करती थी कैसे वो मामा नोटिस करती थी कि कुल्फी बेचने वाला ठंडे मतलब विंटर की कड़ाके की ठंड जोड़ी पहनती है वो बैठा है वो सोच मामा कहने से हाय देखो ना बच्चे होने ही मस्ट बी थिंकिंग के लास्ट बिट कुल्फी है अभी बिक जाए तो फिर जाइए जावा में तो मामा वो नोटिस ऑल दीज लिटिल थिंग्स और मैं उनको देख के मेरे अंदर ये चीज़ें रजिस्टर होती थी कि मामा फील्स फॉर देम एज एन एक्ट्रेस अपने आप को कैसे दूसरे की in another person's shoes दूसरे की जगह पर अपने आप को रख के उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से फील करना ये मेरा बचपन से ममा से मैंने सीखा शी वुड हैव ग्रेट एम्पैथी फॉर लेस फॉर्चुनेट पीपल स्ट्रगलिंग ऑन द स्ट्रीट्स स्ट्रगलिंग Very rare souls are. हाँ जी बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा she was उनका एक अलग तरीके से कनेक्ट था लाइफ के साथ अलग ही तरह से ईश्वरा will let you नहीं carry on everyone's here to listen to you yeah so पिताजी of course was a strict disciplinarian मतलब वो ओनर ने ना कारची कॉलेज जाने से पढ़ा के आने से अपने स्कूल जाएगा से वापस आ जाते तो उन्होंने कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ स्पेशली डेफिनेटली ऑन एवरी संडे सेमिनार्स रखते ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ to teach us good manners civic sense so many things to कहने ना कुट के बिठाया ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ कि डिसिप्लिन इस तरह हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम वेस्ट नहीं करना लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम बड़ा प्रेशियस ਹੁੰਦਾ है you know you have to achieve something with your time just don't while away पेड़ के उत्ते ट्रांजिस्टर रख के गाने सुन रहे don't do that you do that but you don't while away your time your life doing that वो so he taught me value for time ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब मैं हमेशा इस तरह ही सोचा कि I don't have a film, I'm not shooting a film right now, what else can I do with my time? So either I take to the brush or I start writing and that's how all these things have evolved in me also because उन्होंने पहले तो वो बड़ा emphasis देते हुए सी कि you have to utilize your life, don't think और भी कहते सी कि ऐसा सोचना कि तुसी कोई काम ऐहो जाएगा तुसी नहीं कर सकती हैं just because you are girls ये भी बड़ा भारी मतलब दिमाग च बिठाया सी उन्होंने कि you are there's nothing that you cannot do just because you are girls मेरा क्या मतलब है I'm a girl so I can't we can so these are the values that one grew up with दोनों टीचर्स से गए मामा भी टीच करती थी स्कूल के विच सो माहौल वाज बुक्स का
पिताजी को थोड़ा डरते भी सी पिताजी का फाटक थे उन्होंने दस्तक खोनी जैसे सब तो नेड़े जड़ी किताब पे इसी को चुप के बैठ जाना कैसे तो पढ़ रहे थे so that was a bit funny लेकिन yeah these things पानी दे विच सारे और पर उसके बाद आके वापस सेमिनार जरूर होता है Sunday we couldn't escape the Sunday seminar. Your father was also very fond of art. He got out a journal and he contacted Nicholas Vedic for that. And he went to his house. When he was a student in Government College, Lahore, he used to come out with a little booklet called Joy of Art. Ude vaste he approached Nicholas Roerich, the Russian painter, जो थे नगर के विच exiled रहते सी. Then he also contacted Rabindranath Tagore to write the introduction. Then other people, Krishna. Dr. S. Radhakrishnan, and everyone responded to him. Yeah, everybody responded, and everybody. He managed to convince because his own enthusiasm for art was great. It was great. And Deepti also once wrote to someone, Sadhana, a photograph was there. She responded to Deepti, sent her a photograph and an autograph. Oh, सारे fan photographs मंगवाते हैं ना. I mean, everybody writes to their favorite stars, and I also got a picture from Sadhana. Very pretty picture. I still have it. It's in my. Deepti has an elder sister and a younger brother. जो दो sisters हैं, Deepti and Smriti. Now 2 syllables वाले नाम है क्या? Younger brother, parents नाम गुगु है, गुगु. But his formal name is Rohit Das. That's a rather difficult name, so many syllables. How did they arrive at Rohit Das? Rohit Das. Because Pitaji was very impacted by Roerich and he wanted a Russian sounding name. It was a Russian sounding name. Rohit Das. मतलब I forget now. But they were very concerned about the meaning of the names. We were all given names which had solid meanings. It couldn't be without. ऐसे ही कुछ नहीं था. You write that you had very difficult adolescent years. सबके होंगे मुश्किल. Everyone goes through a difficult adolescence, and we all deal with it in different ways. तुम्हारा कुछ तरीका. She had a different way of dealing with her adolescence. My adolescence. You want to? Yeah. During those times, I saw a lot when I was a teenager. When I was 13. I saw a lot of films which were all shot in Kashmir. So all the songs were being shot in Kashmir, whether it was Kashmir Ki Kali, Jab Jab Phool Khile, Arzu, Kashmir, so many songs were being picturized in Kashmir. Those days, all the songs were being shot. Jungli, so many films. So I decided that I want to go to Kashmir. And so one day I ran away from home. I took the train. How old was she? Please ask. 13. ये 13 में ही ऐसी बेवकूफ़ियाँ आप कर सकते हो, बाद में तो अकल आ ही जाती है. But ये 13 is a very dangerous age. You want to see Kashmir, तो you take off. कुछ नहीं plan, nothing. कहाँ जाना है, कौन क्या, nothing. Just I will reach Kashmir tomorrow morning because रात को there's a train to Pathankot. From Pathankot I will take a bus, and the bus will take me to first Jammu and then to Srinagar. Alone or with friends? Alone. She ran away from home. I ran away from home, but I tell you, I am most sheepish about this act of mine because the angst that I must have caused my parents during those few. Of course, I mean at Pathankot station, पुलिस ने ही मेरे को पकड़ लिया कान से और मुझे वापस भेजा और मेरे पेरेंट्स को इतला करी कि your daughter is here and she's under our care. तो वो तो ठीक था, वो तो हुआ. But I was very disappointed that I didn't even make it to Jammu.
I mean, at least I could have seen some mountains. कोई तो पहाड़ दिखते हैं, ये तो पठानकोट है, पठानकोट में तो पहाड़ दिखते नहीं है इतने, unless you go out and you know. But there was a पहाड़िया there on the railway platform. वो कुछ गाना गुनगुनाता था अपनी पहाड़ी धुन में, you know, बही जाना something, पल पल, something like that. And that also, I mean, when I think of that, I've recreated that whole night in this book. I've recreated how I'm sitting in the train going to Pathankot, what happens, how I get caught, how I'm sent back, and how I feel after seeing my parents. I felt really horrible. I felt horrible. Ki ye kya? I mean, how could I have done this to my mother and my father? But those are the years which are very unpredictable. I was very unpredictable because I was a huge introvert. तो मेरे अंदर क्या चलता था ये किसी को पता ही नहीं होता था. जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनका सब पता चल जाता है कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब इनका दूर क्या है. But with me, because I was such an introvert, कुछ नहीं पता होता था कि इसके दिमाग में क्या खुराफातें चल रही. What was the reaction of your strict father? He was most understanding, I would say, about it. He pulled out some magazines जो उस टाइम पर हम लोग स्कूल गर्ल्स कॉमिक्स पढ़ा करते थे. तो उसमें था द एडवेंचरस 3, द सीक्रेट 4, इस तरह की नॉवेल्स या बुकलेट्स, छोटी छोटी एडवेंचर बुक्स हम पढ़ते थे. तो आई रिमेंबर माय फादर शोइंग दोज बुकलेट्स टू नेबर्स हु केम and said कि नवल साहब is everything okay? And he said yes. कहते हैं देखो ऐ चीज़ें पढ़ के ना सर दिमाग you know, this is what these kids want to follow. They want to do something adventurous with their lives. इस तरह से he told me, he never, once I came back home, once he asked me, beta, what happened? I told him. And then he said, never once was this topic ever uttered in my house again. Never once. He just decided, okay, Hua, she's fine. Let's put this behind us. And he said that you must, Gyani ji told me, he said, beta, I'll be your confidant. Whatever you cannot tell your mother and your father, tu mainu bas, main hai na. So, those characters and those people. You shared your innermost thoughts with one more entry, your diary. हाँ, डायरी तो ऐसे ही फजूल होती थी. डायरी में कुछ लिखने जैसा तो होता ही नहीं था. सब छुपाने लायक? नहीं, लिखने जैसा ही नहीं, छुपाने लायक ही नहीं होता था ना. क्या छुपाना? तो डायरी was just the fact. One was very enamored कि डायरी, जब मैं डायरी लिखती हूँ और उसमें आज मामा ने डांट दिया, आज ये हुआ, दीदी ने मेरी कॉपी का पेज जो है वो निकाल लिया और स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो हम का डांट पड़ी, इस तरह की चीज़ें. बट डायरी, आई लाइक द ड्रामा of burning my diary when I left New York. I decided I should burn my diary क्योंकि डायरीज ना जलाई जाती हैं. जलानी होती है इनको. तो मैं भी अपनी डायरी जलाऊंगी जब मैं अमेरिका चली जाऊंगी. उसमें कख नहीं था जलाने जैसा. Coming back to your desire to visit Kashmir, you used to go to Himachal a lot. Because it happens in Manali, Koti, every summer. Yeah, all the time. जब छोटे थे तो पिताजी की जो छुट्टियाँ होती थी, they would coincide with our school holidays because he was teaching. So his holidays, Mama's holidays, Mama was teaching in a school, and our school holidays, they would all coincide. So June, July were the 2 months we would go to Kulu. छुट्टियों में छुट्टियाँ पूरी बितानी वहाँ पर. और वहाँ एक घर मिलता था 50 रुपए का for a month, 50 rupees a month वो लेते थे और वहाँ बड़े मस्ती से रहते थे. और पिताजी खड़वट पे ले जाते थे और वहाँ पे उन्होंने बैठ के अपनी किताब पढ़नी.
दीदी और मैं पानी में खेल रहे हैं और मामा अपने पत्थरों पे बैठ के पेंटिंग किया करती थी, ऑयल शीट्स, छोटे छोटे ऑयल शीट्स लेकर के. So this was, it was kind of idealistic environment that one grew up in. You know, so when you don't get those things later in life, you feel kind of shortchanged. Because you just, your parents have given you such an ideal environment to nourish your thoughts, your talent, you know, सारी चीज़ें कि वही आप ढूंढते रहते हो बाकी की ज़िंदगी भी कि वैसा माहौल मिले और वैसा हो तो you know you keep looking. You know, there are two people in this book other than well, there are lots of our friends who find mention, but I just wanted to share this with everyone. The first two lines of poetry that you ever wrote, who was it who encouraged you? School में. School में? Yeah. I wrote some silly poem. बारिश का टाइम था, मैंने एक पोएम लिखी, उसमें एक silly सा सेंटेंस था, पानी भागा भागा आए. So I was very excited कि मैंने बारिश की पोएम लिखी है. So I ran at the end of school, bell जब हो गई, I ran to the cycle shed. I used to sit behind my sister and used to pedal back home. तो जब मैं गई, दीदी मैंने पोएम लिखी, तो I saw कि किरण बेदी was standing right behind दीदी. तो मैंने कहा ओ दीदी को तो दिखाना ठीक था. Not Kiran Bedi, I have written some silly sentence like पानी भागा भागा आए. So how, I mean, they are going to laugh at me. So I didn't want to. But Kiran said, no, you read. Deepti, you read what you have written. See, you've written what you feel strongly about. जैसे तूने महसूस किया, वैसे तूने लिखा है. और मैंने पढ़ के सुनाई and she said, you know what? You continue to write. With every poem that you write, you will write better and better. And that's how I have 3 books of poetry. Today, if she had laughed, and Didi had laughed, maybe इतनी encouragement नहीं होती तो शायद मैं poetry नहीं लिखती. Let's open. Yes. So we can now open. We can have a question answer session. How much time do we have? How much time for questions? The earliest point. 10 minutes we have for questions. So अगर आपका कोई question है, कोई mic है तो please. Hello. If they make a classic, I will want to be in it. But ये थोड़ा जब कोई classic बनेगी ना पंजाब, I will do it. Yes. Hello. हाँ जी. By the way, I am Madhu Sharma from Government College Amritsar. I was 1 year junior to you. And secondly, I have another association because your father was a college lecturer and my father was also a college lecturer in Bedi College. He was Professor Cheif of Punjab. Second, the question I am going to ask, because you say that you have written some poems. I am reminded of that poem which you have published in the college magazine, The Amar. That was about Verka ke khet. If you remember. Verka ke kheton mein. Verka ke kheton mein, while coming back from Kashmir, you have written that poem. I still remember that poem. You must have recalled. Verka ke khet. In Amar C, Government College Amritsar. I would love to read. जरूर कुछ उल्टा सीधा लिखा हो. जो भी लिखा है, पर मैंने पॉइंट याद है कि वेरका के केस दीप्ति नवल ने लिखी हुई है. तो जब रेस करके मैं आज जड़ा ना. I think याद है? बस इतने याद है. अच्छा जी. मैं पहले तो चमक साहब कहना कि बिल्कुल मलट्टी जानते हो? हाँ जी, मलट्टी. ऐसे खाओ तो गला ठीक हो जाए. Really, thank you so much. आगे देखना है, मलट्टी है, मिश्री है,
ਇਹਦੇ ਚ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा और दूसरी गल है कि जिस स्कूल तुम पढ़ते हो मेरी वाइफ भी उत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पढ़ती थी अच्छा और मेरी कजन और सिस्टर चांद कपूर भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पढ़ती थी। हाँ चांद हाँ। तुम्हारी कजिन सी खाली मेरी मतलब मेरी वाइफ भी कजन थी अच्छा शी वाज वेरी मेरी साली थी वेरी गुड ਤੁਸੀਂ मेरी साली लगते हो सामने ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ओके डन खाना है तो थोड़ा सा गर्म पानी ना पियो ओके सब ठीक हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਰਮ ਹੈ। थैंक यू जी। ਹਰ ਲਮਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। मेरे पास बुक भी है मैं आपको हाँ दे दो Okay. और ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। पोल खुल जाएगी मैम आपके एक फ्रेंड थे आशा एडगर आप उनके साथ कॉलेज में आशा एडगर आशा एडगर, I remember. यस मैम आप उनके साथ मेरी नानी से पेटीकोट सिलवाने आए थे यस मैम वो योर नानी यस मैम एक्चुअली वो मेरे नेबर में रहते थे अच्छा। तो वो मेरी मासी हैं तो आप मेरी नानी से पेटीकोट सिलवाने आए थे ओके हाउ इंटरेस्टिंग अच्छा एडगर मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये आपकी फोटो है आपकी बुक पे आप कहते हैं कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं पर जो ये फोटो है वो बहुत एम्बिशियस एक लड़की की है मतलब जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं बहुत सारी चीजें हैं बयान करने के लिए ड्रीम्स है एम्बिशन इज डिफरेंट ड्रीम्स है हम 16 है ओके तो मैम ये Dreams. फोटो का कुछ स्पेशल है क्या मतलब ये फोटो आपने कब खिंचवाई या शिवराम स्टूडियो पे खींची होगी ओके वहीं पे सारे फोटोज हम उधर ही जाते थे कोई भी इवेंट होता था कोई फंक्शन होता था और जब हमारी डांस की परफॉर्मेंसेज होती थी हम अगले दिन डांस का ड्रेस उठा के शिवराम चले जाते थे फिर वो ड्रेस वहाँ पहन के अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते थे ये भी हम करते थे वी वर ऑल गर्ल्स टुगेदर संतोष इज हियर संतोष इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन देयर शी इज संतोष संतोष का भी एक किस्सा बताऊंगी मैंने किताब में लिखा अच्छा ओके सो दीज वर माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स किरण दुग्गल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹਾਂ। ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ वही ड्रीम्स की चमक होती है मैं चमक आई इस करके मैंने चमक नजर आई हाँ। और चमको जो of ਤੁਸੀਂ course by this time हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਮਕੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸੇਮ ਹੈ ਅੱਛਾ देयर इज वन डॉक्टर सीमा गरेवाल ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂ ਵਰ ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ 2012 ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ अच्छा यस I still have that recording ओह वाओ ओके और पिछले 10 साल तो मैम whenever your birthday comes या फिर कोई और occasion होता है हाँ I message you and I always get a reply और मेरे ख्याल कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी मैं अपनी जिंदगी बहुत लोगों नाल बात किया कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਪਥ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਮ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪਨਸ How? I always want, you know, कई remarks ऐसे होंगे Facebook and Instagram पे. Oh, you're very beautiful. You're very so sweet, so innocent, so charming. तो मुझे लगता है कि looks is something that has come to you from your mother or God has made it kind of reasonably good looking. तो वो तो हो गया. उसमें आपका अपना कुछ contribution नहीं है. Your intellect is going to talk about who you are.
तो लुक्स को छोड़ दो, उसके आगे की बात अगर कोई करता है तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। Great. Excellent. Any more question or any more feelings? कोई हो रिश्ता? Yes. ਸੋ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਾਂਜੀ 1989 ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। It was a very revolutionary sort of a subject because a girl marries, come into the village, और जब मुँह दिखाई की रस्म होती है तो she sees this man Raj Babbar and she wants to get into a relationship with him, but he says कि उन्हें इतना बढ़िया dialogue सीगा राज बब्बर का कि क्या था अड़िया एक बार नहीं वो नहीं अगई when she says that I'm ready to face the world for you, why do you shy away from me? I'm ready, you know. And he says कि करना फिर पाप कमा के अगई पता नहीं केड़े कर्मा दा फल भुगत रहे हैं। तो basically that film is based on a novel by गुरदयाल सिंह। Yes, it's a novel. वो नॉवल में थोड़ी स्टोरी एलेबोरेटेड भी है ज़्यादा, थोड़ी होगी। तो मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है उस फिल्म से, और उसके बाद मैंने आपका काफ़ी सिनेमा देखा, एंड आई वॉज इन 8th क्लास व्हेन माय फादर मेड मी वॉच दैट फिल्म। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, मैं गुजारिश की थी कि लम्हे लम्हे दे विचों एक पढ़ दें जी। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चले, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चले, कुछ ना कहें, अपनी अपनी तन्हाइयां लिए, सवालों के दायरों से निकलकर, रिवाजों की सरहदों के परे, हम यूं ही साथ चलते रहे, कुछ ना कहें। तुम अपने माजी का कोई जिक्र ना छेड़ो, तुम अपने माजी का कोई जिक्र ना छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज़्म ना दोहराऊं। तुम कौन हो, मैं क्या हूं, इन सब बातों को बस रहने दे, कुछ ना कहें। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चले। बहुत So any more questions or any more feelings? Yes. Last 3 years. It's called दो पैसे की धूप, 2 पैसे की 4 आने की बारिश। मैं एक एंड yeah. It is my, I wrote it, directed it, produced it. Acting उसमें मनीषा कोइराला ने की है, और it's a very अलग टाइप की film about bonding. It's about an aging prostitute. It's about her disabled child, and it's about a struggling gay songwriter which Rajat plays. तो ये 3 जब इकट्ठे आते हैं तो कैसे वो बॉन्ड बनता है? Because there's no reason why a prostitute and a gay man should come together and develop this bond.
but that's what I've tried to redefine what a bond can be. It doesn't have to be sexual love only that will इस किताब में पढ़ने तो बाद सारी होर जिज्ञासा निकलेगी और फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ और जिन्होंने इन्होंने तस्वीर करवानी हो सीएम साहब मैं कहूँगा नीचे आ जाएंगे और एक एक करके स्टेज पे आएंगे वी विल फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स असि रश नहीं करांगे डिसिप्लिन दे नाल आवांगे उन्होंने नाल खड़े हो तस्वीर होएगी ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच जाएगी दूसरा ਜਿਹੜੀ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी इन्होंने सेक्रेड हार्ट स्कूल का जिक्र किया इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र किया इन्होंने कटरा शेर सिंह का जिक्र किया और बाजार का जिक्र किया लेकिन जी कला की गुणती इन्हों ठाकुर सिंह स्कूल ऑफ आर्ट्स के विचों मिली शायद इस हस्ती को निखारन दे विच उस गुणती का भी असर है सो ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी डेफिनेटली big role it has played here. I'm very thankful for that. और दूसरा गल शुरू की सी कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਕੈਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਲਾਈਵ ਸਕੈਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੈਚ ਮੈਂ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਡਮ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ कोई माइंड नहीं करना थैंक यू पेंसिल स्केच मैं गुजारिश करांगा चीना साहब क्या बात तो मैं गुजारिश करूँगा चीना साहब के एक स्केच दीप्ति जी को ठीक है एक फुलकारी इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से दीप्ति जी ने मैं गुजारिश करता प्रीति गिल ते सरजोत बहल जी ने ते कृपा करके अंतिम माजा हाउस की तरफ तो एक टोकन असी दीप्ति जी ने प्रेजेंट कर सके सो तालियां बहुत सारी तालियां और इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ from Baja House नवरू वीडियो कैमरा फोटो और जी प्रीति जी किशोर जी बेल सर ये भी किशोर जी आंसर